Dear students, welcome to my channel Maths for You. Today's topic is application of Euclid division lemma. Here, the first question that we will discuss today is show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1, where q is any integer. So we have already discussed that if a and b are two positive integers and a is greater than b, अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास q एक आता है जो कि क्वोशिएंट होगा और r आता है जो कि रिमाइंडर होगा. So this can be written as in the form dividend is equal to divisor into quotient plus r, where a is the dividend, b is the divisor, q is the quotient and r is the remainder, and where r lies, r is greater than equal to 0 and less than b. Here in this, let us take b is equal to 2 and possible remainders will be 0 and 1 because remainder is less than 2. So when, let us see what is the dividend when r is 0. So when r is 0, dividend a will be equal to 2q plus 0, that is 2q, which is even. We know that if we multiply any integer with 2, it will come out to be an even integer. For example, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 tens are 20. All these numbers are even number. Second option is when remainder is 1. Then our dividend a will be 2q plus 1. Here, which is odd. Here we can see that if we add 1 to any even number, it will become an odd number. For example, 2. 2 even number है, उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा. 3 जो है वो odd number है. 10 is an even number. 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, which is an odd number. Similarly, we can take any number. Similarly, we take any number. 98 है. 98 is an even number. 1 ऐड करेंगे तो odd number आएगा. Okay, clear? So let's move on to the next question. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is any integer. इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इस फॉर्म में होगा. पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होगा. तो सेम अगर हम दो नंबर्स a एंड b लेते हैं और a को b से डिवाइड करते हैं तो q will be the quotient and r will be the remainder. So we can write dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. A is equal to bq plus r. So let us take b is equal to 6. So possible values of r is 0, 1, 2, 3, 4, 5 because remainder will always be less than b. So let us take first, if r is 0, then a will be equal to 6q plus 0, which is 6q. Now, in the previous question, we have shown that जो even number होता है वो हमारा 2q की फॉर्म में होता है. तो इसको भी अगर हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं, we can write it like this 2 times 3q. मतलब ये 2 को 2 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेगा तो वो हमारा ऑब्वियसली क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा. इसका मतलब a जो है when remainder is 0 then a will be even. Now what will happen if remainder is 1? Remainder is 1 तो a जो डिविडेंड है that will be 6q plus 1. और हमने पिछले क्वेश्चन में ये भी देखा कि अगर इवन में हम 1 ऐड करते हैं तो it will comes out to be odd. So this a when remainder is 1 it is odd. What will happen when the remainder is 2? So even number में 2 add करेंगे तो it will come out to be even. For example, 4 is an even number. 2 add करो 6. 6 is an even number. 10 is an even number. 2 add करिए 12 आया. 12 is an even number. Okay. Now if similarly we can add 3. If remainder is 3, then 6q plus 3 will be an odd number. Similarly, 6q plus 4 will be an even number and 6q plus 5 is a odd number. So we can say that
any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Let us move on to the next very important question. This is frequently asked question in the CBSE papers, previous years papers. So use division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. Same case, let us take same two integers a and b, and a is greater than b, and when we divide these numbers we get a quotient q and r as remainder. So let us take b as 3 and a will be equal to 3q plus r, where r is 0, 1, 2, because r will be less than 3. So we have r is equal to 0, 1, 2. So in this question, this is very important to see that he is talking about square of any positive integer. Square of any positive integer. So we have to square the dividend. A को हमें square करना पड़ेगा. So जब हमने a को square किया, this becomes a square is equal to 3q plus r whole square. So if we have to open this square, we have to apply the identity a plus b का whole square. So मैंने रफ में लिख रखा है ताकि आपको कोई confusion ना हो. You must know this. This is the way you must know. You must remember that we have to open this by using identity. Identity लगाने के बाद we have the answer is 9q square plus 6qr plus r square. ये आइडेंटिटी आ गई हमारी आंसर सॉल्व करके. अब इसी आंसर में हमने r की वैल्यूज डालनी है और हमने देखना है कि हमारा डिविडेंड किस फॉर्म में आता है. तो r अगर हम 0 लेते हैं तो ये a स्क्वायर, देखो इधर 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर है. r 0 लिया तो r स्क्वायर 0 हो जाएगा, 6qr भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो 0 आएगी. तो a स्क्वायर जो है वो हमारा आ गया 9q स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर उसको या तो हमें 3m की फॉर्म में लिखना है या फिर हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 3 times 3q स्क्वायर. So this can be written as 3m. What is 3q square? This can be any integer m. So we can replace 3q square by m. So where m is equal to 3 square. Now if r is 1, now look at here, again the product, look at here. r square जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा. 6qr, r 1 है तो 1 से 6q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q हो जाएगा. So final product we will have a square is equal to 9q square plus 6q plus 1. Now फिर से हम क्वेश्चन में देखेंगे, this cannot be written as in the form of 3m because यहाँ पे 1 है और 1 से we cannot write it in the form of 3m. So can we write in the form of 3m plus 1? So देखिए क्योंकि 1 है तो 3m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 1 फर्स्ट टू टर्म्स से हम 3 कॉमन ले सकते हैं. 3 कॉमन लेके वी कैन गेट 3 times this प्लस 1. और ये 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम रिप्लेस कर सकते हैं m से, which is any integer. So we can write if r is equal to 1 then a square is equal to 3m plus 1. Similarly next option, if r is equal to 2, अगर r 2 है तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. और जब हम r 2 से 6q को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 12q हो जाएगा. तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. अब इधर बहुत ही आंसर ध्यान देने की जरूरत है कि ना ही ये हमारा 3m की फॉर्म में दिख रहा है, ना ही हम इसको 3m प्लस m की फॉर्म में दिख रहा है. सो इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो ये जो 4 है हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस m की 3 प्लस 1 की फॉर्म में. जब हमने इसको 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया तो हम देख रहे हैं इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स 9q स्क्वायर 12q और प्लस 3
इसमें से 3 कॉमन आ सकता है और 1 हमारा अलग ही हो जाएगा. So here again we can write it in the form of 3m plus 1, where m is any integer and equal to 3q square plus 4q plus 1. So final answer. So we have shown that square of any positive integer can be of the form 3m or 3m plus 1. So our next question is, using division lemma, we have to show that cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. सेम प्रोसीड करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में जो डिफरेंस था, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा गया था, इस क्वेश्चन में क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया. तो डिफरेंस सिर्फ आइडेंटिटी लगाने पे ही होगा. उसमें हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, इसमें हमने a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है. एंड देन द सेम मैनर R0 होगा तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी, R1 होगा तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी, और R2 होगा तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल डू इट ऑन योर ओन and check your answer. Students, you will do all these NCERT questions in your notebook as classwork, and you will click this link and will download this question bank, and from this question bank first chapter you will at least practice 8 to 10 questions from here, and doubt if any, comment in my this comment in my channel. Thank you so much. Thank you.